Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. I welcome you all to English Buffet.5. So viewers, today I am again with you to impart you something very valuable. What's that? Yes, these are the differences between British and American English. You know viewers, इससे पहले हम कुछ differences कर चुके हैं and a few of them were phonics differences, आवाज़ का जो difference है. Secondly, we did spelling differences in British and American English. And thirdly, lastly, we did vocabulary differences. कौन से ऐसे words हैं जो अमेरिका में different use होते हैं और ब्रिटेन में अलग से. Today we are going to do something else, that is verbs. Definitely इन दोनों Englishes में verbs का भी कुछ difference पाया जाता है. I hope कि आज के lesson को आप enjoy करेंगे and by the end of this lesson you will be able to explain the verbs and identify them easily. So let's get started. You must know viewers that there are two established patterns of writing verbs, forms of verbs in English. एक पैटर्न कहलाता है रेगुलर और दूसरा है इरेगुलर. इस पे ऑलरेडी आपके पास एक वीडियो है. ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपके लिए बना चुकी हूँ, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, राइट. सो सी those forms of verbs ending on ed, second and third form, is called regular pattern, and those which are ending on any other pattern is called irregular pattern, right. अब देखिएगा on the very left side, American English is mostly following the regular pattern, means the forms ending on ed. लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी भी हैं जो कि different होंगी definitely, जैसे get, got, gotten, the last one. लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा नहीं है. ब्रिटिश इंग्लिश में कभी ईडी पैटर्न भी होगा और कभी इरेगुलर. सो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट पाए जाते हैं, राइट. सो ब्रिटिश इंग्लिश एंड्स मोस्टली these words end on t, learnt, burnt, dreamt, and British English follows get, got. ब्रिटिश इंग्लिश में गेट की सेकेंड थर्ड फॉर्म गॉट होगी, जबकि अमेरिकन्स विल फॉलो गेट, गॉटन. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट देखें. अब इसमें भी कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं, डेफिनेटली यू विल एन्जॉय. देखिएगा स्पेल. सो द ब्रिटिश इंग्लिश इज फॉलोइंग spelt, whereas Americans follow spelled. In the same way, spill, you can go through. Kneel, knelt, whereas Americans do kneeled. और इसी तरह से एंड तक आप इसको गो थ्रू करें. नेक्स्ट, अब इनको सेंटेंसेस में चेक कीजिएगा. अमेरिकन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी थर्ड फॉर्म गेट की गॉटन है, राइट. जबकि ब्रिटिश जो हैं वो गॉट लिखते हैं, गेट, गॉट. दोनों ही इरेगुलर पैटर्न पे. आई हैवंट गॉटन द कॉन्फ्रेंस रूम रेडी येट. आई हैवंट गॉट द कॉन्फ्रेंस रूम रेडी येट, राइट. अब यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट आ रही है. लास्ट एग्जाम्पल देखिए व्यूअर्स. ही हैज़ प्रूवन हिज पॉइंट. अमेरिकन्स प्रूवन, दे यूज़ दिस, वेयर एज ब्रिटिश यूज़ प्रूव्ड. सो जब कभी भी ये वर्ड्स आपको दिखाई दें तो देर इज़ नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड. आप इनको पहचान जाइएगा कि किस तरह से ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है. सी द नेक्स्ट वन. अब इसमें मोस्टली आपको मैं बातें बता चुकी हूँ. सिर्फ एक एग्जांपल आपको यहाँ पे कोट करना चाह रही हूँ मैं कि सी द वर्ड फोरकास्ट. दोनों ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश बोथ फॉलो दिस वर्ड फोरकास्ट. लेकिन जो अमेरिकन्स हैं दे यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ फोरकास्ट एज फोरकास्ट, बट द ब्रिटिश यूज़ फोरकास्टेड. ठीक है, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ फोरकास्ट इज फोरकास्टेड इन ब्रिटिश इंग्लिश, वेयर एज अमेरिकन्स राइट फोरकास्ट. सो कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स हैं जिनको आपको जहन में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, waffle on. Waffle is something like eatable, but if we add a preposition with it, it will become something else. लेकिन दोनों इंग्लिशेस में इनका मीनिंग entirely different लिया जाता है. The Britons say it means to talk too much, बहुत ज़्यादा बातें करना, talkative होना. लेकिन what do Americans say? To be indecisive, जिससे फैसला ना हो सके, right? Means they consider waffle on as
to be indecisive. So देखें इस तरह से ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में वर्ब्स का डिफरेंस पाया जाता है. आप देखिएगा, दिस प्रोग्राम is used in American, Canadian and Australian English, whereas this one is most of the times used by British English, right? Next, the spelling difference of the verb cancel is different. You can see Americans skip one L in the second form of word cancelled, right? जबकि ब्रिटिश जो हैं वो डबल एल कंसिडर करते हैं. इन वर्ड्स को व्यूअर्स याद रखिएगा. नेक्स्ट, दिस इज अ वर्ड विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूज मेनी पर्सन्स. ब्रिटिश इंग्लिश uses practice as a verb and practice as a noun, whereas in America practice is acceptable for both as a verb and noun. देखें कितना इंटरेस्टिंग डिफरेंस है. सो आपको नहीं लगता व्यूअर्स दैट अमेरिकन इंग्लिश इज़ मच ईजियर दैन ब्रिटिश इंग्लिश? ऐसे लगता है जैसे ब्रिटिश इंग्लिश इज़ फॉलोइंग मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस, whereas in American English we are at ease to do the things, right? See the next example. Dived and dove. Both are acceptable in both countries, but Americans prefer dove as a second form, whereas British accepts dived as the second form. ठीक है? Next one and the last one, I must say, the difference of auxiliary and modal verbs. Viewers, in British English, need not is acceptable and most of the times it is used, whereas Americans use don't need to, right? See the examples. You need not to come to work. This is done by British. And you don't need to come to work. This is by Americans. So see the differences. These are the two terms in front of you, AME. It stands for American English and BrE, British English. इनको कभी मत भूलिए. Whenever and wherever you see these terms, do remember that these are the for you can say British English and American English. और एक और चीज़ at the bottom, viewers इस information को भी याद रखें that there are around about 375 million people who speak English as their first language, right? जैसे हमारी first language is Urdu and as per the locality Punjabi and many others, so many countries in the world have first language as English. So 375 million people are speaking English as their first language. So what is else? It is, while according to the population of the different countries, the American English speakers are more than the British English speakers. शायद इसीलिए भी मैं अभी आपसे कह रही थी कि अमेरिकन इंग्लिश इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, इसलिए भी शायद इसके स्पीकर्स ज़्यादा हैं. So that's all for today. I hope you are going to enjoy this video. On a lighter side, I am making such videos for you so that you may not get bored. Whenever you are on move or you are anywhere, try to focus the words around you and try to identify the differences of these two languages. I hope that you will definitely identify them easily and you will also enjoy. So if you like the video, try to subscribe the channel and don't keep this knowledge to yourself. Try to share it with others as well. Okay, so till the very next lesson, take care of yourself. Allah Hafiz.